today we are here in the Pro Engineers Learning and Research Center. We are going to learn something about robotics and electronics workshop. And based on these two, we will understand very important topic is current electricity or effects of electric current. Is that clear? Yes, sir. So today in see, basically we have n number of other workshops, basic electronic workshop, basic training program, processors, controllers, embedded system and smart robotics workshop. Out of this, today we are going to learn two workshops. One is for robotics and second is for electronics. As you can observe, one combot is communicating with other combot. Combot means communicating robot is called as combot. Right? We have given a path to one robot and that robot is sending signal to another robot. And based on that, virtually that robot also takes the same path or moves in the same path. That is called as virtual line follower. There is no line to this robot, right? Yes. But still it is rotating and that is nothing but virtual line follower. So now before this Kunal was asking, sir, where it will be used, right? Let us say example, there is a company where manufacturing is taking place and same manufacturing unit or lanes are there where 4 to 5 sections are there. If we need to observe each and every section, then we have to have a person to keep watch on that. So instead of keeping a person or instead of hiring a person, we can keep a robot which will take the same path and come again, same path and come again. Precision level will be highest, right? This robot will give you precise supervision, precise output, no manipulations, no jhoot bolna, right? Person can say lie words or person can make a human errors, but robot cannot, right? So these robots are communicating with the help of Bluetooth transmitter and receiver. Is that clear? Yes. So how these robots are made? To understand that, first we will learn a very basic type of robot, that is wired robotics, right? This is what is wireless. So now we have started basic electronic workshop in which we need to study all these topics starting from what is electricity, what is current, 1 ampere, battery, voltage, potential difference, types of batteries, then Ohm's law, then Joule's law, then conductor, insulator, series, parallel, electric power. At the end we will come to know how we can calculate the electricity bill which we are receiving at our home, right? So now question arises, what is electricity? Every student, everyone is aware that we all are using electricity. Yes. We all are having electricity connection at our home, right? Yes. With the help of that electricity, this smart television is working, mobiles are working, through which we are recording this lecture, right? Each and every electronic component is running with the help of electricity. But question is, what is electricity? How we can define it? Sir, you have shown two pictures over here. What this picture belongs to? This is one atom and this is another atom, right? Now, sir, something is moving from this to this. What it is? It is electron. It is Electron. or very specific free electron. The electron which is free can move and settle down in the second atom.
Then what is the definition of electricity? When one electron from one outermost shell of atom goes to the another outermost shell of another atom, this flow of electron is called as current electricity. What I said? When one electron moves from one outermost shell of one atom to the another outermost shell of another atom, this flow of electron is nothing but electricity. Right? Now question arises, sir, what is the unit of this electricity? Unit is ampere. Unit is ampere. Unit is Ampere. say loudly, what is the unit? Ampere. एम्पियर. राइट सर, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो कितना एम्पियर का होता है? कौन बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है? 220 to 240. That is voltage. 220 to 240 is the voltage. What is the current which we are receiving at our home? And that is 1 ampere. That is 1 ampere. Is that clear? Okay, keep this in mind. Now in our book the picture has been displayed, right? In 9th or 10th standard, this picture represents conductor. This picture represents conductor. So what is conductor? Conductor is one who is taking charge of bus. That conductor is different. We are talking about conductor through which electricity can flow. Conductor through which electricity can flow means there is someone who does not allow to flow electricity through it. Who is that? Insulator. Correct, Sumit. That is insulator, which does not allow electricity to pass through it. Is that clear? It means, what is the definition of conductor, Sanket? The material which allows electricity to pass through it. That is conductor. And the material which does not allow to pass electricity through it, that is insulator. Example of conductor: copper or any iron or any other metal through which electricity can pass is the conductor. Now second example of insulator: wood, rubber, glass, and number of other examples are there, right? But sir, you have shown two boxes over here. What these boxes represent? When there is a conducting wire with no battery, with no source of energy, then all electrons are in random direction. सर नहीं समझा, ये कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में कैसा होगा? एक एग्जांपल, क्लासरूम में जब टीचर नहीं होता तो क्लासरूम में मौजूद सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? रैंडम डायरेक्शन, इधर उधर देखते कि नहीं? When teacher comes in the classroom, then student take a fixed view in one direction, right? It means there must be a source of energy for making all electrons to flow in a single direction, right? So the first picture represents, it is a conductor. Conductor carries maximum number of electrons. Conductor carries Maximum number of electrons. and insulator which has very less number of electrons. Sir, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है? यस, ऑफ कोर्स होता है. आयंस चार्जेस हर एक एलिमेंट में, सिर्फ उसके नंबर्स कम ज्यादा है. क्लियर है? सो कंडक्टर में याद क्या रखना है? इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इन कंडक्टर, Electrons are more. in insulator very less amount of electrons are there. Is that clear? Yes, sir. Sure. Yes, sir. But when there is no source is connected, जब उस वायर के टुकड़े को कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन रैंडम होता है, इर्द गिर्द होता है, एक डायरेक्शन में नहीं होता है. सर फिर वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा?
एक डायरेक्शन में कैसे आएगा, ध्यान से समझो। When we will connect a source over here, that is cell or battery, to the conductor, then if this side is positive, another side is negative, here we will get negative charges at the one end of the conductor. Another end of the conductor will carry positive charges. Now, please recall, opposite charges attract each other, similar charges repel from each other. What I said? Opposite charges attract each other and similar charges repel from each other. अगर कोई मराठी माध्यम का बच्चा मुझे सुन रहा है इस वीडियो के माध्यम से, तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा, समान प्रभाराचे समान प्रभार म्हणजे चार्जेस एकमेकांकडे आकर्षिले जात नाहीत, परावर्तित होतात, आणि विरुद्ध प्रभार एकमेकांकडे आकर्षिले जातात. मग कुठले प्रभार असतात? धन प्रभार आणि ऋण प्रभार. पॉझिटिव्ह चार्ज, नेगेटिव्ह चार्ज. अपोजिट चार्जेस attract each other, Sharmaji, and similar charges repel from each other. Is that clear? Yes, sir. So, based on this statement, यहाँ पर कौन से चार्जेस आ गए? Negative. इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव. सर यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव, तो एक दूसरे के पास आएंगे क्या? नहीं, वो किसकी तरफ भागेंगे? पॉजिटिव की तरफ. इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू Positive. इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम Negative to positive. कीप दिस इन माइंड. बट ध्यान से समझो, कन्वेंशनल करंट जो बैटरी से निकल रहा है, conventional current which is coming from battery, Sachin, that is from positive to negative. आलस कोई नहीं देगा. हाँ, ध्यान से मॉर्निंग लेक्चर में एकदम एनर्जेटिक रहना सबने. कन्वेंशनल करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? Positive to negative. पॉजिटिव टू Negative. पॉजिटिव टू Negative. कौन फ्लो होता है? Conventional current. मतलब जो रेगुलर बैटरी का करंट है वो. सर फिर ऐसा क्यों हुआ? गलत है ये. एक नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, एक पॉजिटिव टू नेगेटिव. हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सर, नन्हे मुन्ने बच्चे. नहीं, जब हम लोग पोटेंशियल की बात करते हैं, जब हम लोग किसकी बात करते हैं? पोटेंशियल. तो पोटेंशियल हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल. पोटेंशियल ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सर नहीं समझा, हमें थोड़ा समझाओ. साइकिल है, साइकिल, उसको व्हील है, उसका व्हील के ट्यूब में अगर हमने पिन घुसा दिया तो क्या होगा? अंदर क्या होगा? लेकिन ये गलत है. बाहर की एयर इज प्रेजेंट, आउटसाइड एयर इज देयर, इनसाइड एयर इज देयर. अमाउंट ऑफ एयर एज कंपेयर टू इनसाइड, आउटसाइड ज्यादा है. यस और नो? Yes. तो अगर बाहर एयर ज्यादा तो वो ज्यादा एयर अंदर जानी चाहिए. अंदर की एयर बाहर क्यों आई? Pressure. Very good. Inside the tube, pressure was high. So higher pressure से Lower pressure. उच्च दाबाकडून कमी दाब. कमी दाबाकडे. राइट? तो अब एयर का हमने एग्जांपल समझा. सेकंड, 7th फ्लोर का बिल्डिंग है. ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग में मैंने 1000 लीटर का पानी का टैंक भरकर रखा हुआ है. उसका पाइप लगाया और पाइप में 7th फ्लोर पर लेकर गया. मेरा घर 7th फ्लोर. पानी फटाफट ऊपर जाएगा कि नहीं? नहीं. अरे टैंक भरा हुआ है, पाइप लगा है, मैंने घर के अंदर लिया है, पानी क्यों नहीं आएगा? प्रेशर नहीं है. फ्लो होने के लिए उसको प्रेशर चाहिए. तो चलो मैं उसको थोड़ा एग्जांपल थोड़ा सोचता हूँ. तो जो मेरे सब होनहार बच्चे 9, 10, 11, 12, उन सब बच्चों ने क्या बोला कि सर आप क्या करो, इस टैंक को ऊपर रखो टेरेस पर, फिर पानी आएगा. मैंने बोला आएगा पक्का? नहीं आएगा तो मेरा खर्चा वेस्ट हो जाएगा. वो बोले सर आएगा.
तो मैंने वो क्या किया, टैंक को टेरेस पर रख दिया। टेरेस पर रखने के बाद पाइप से संकेत घर के अंदर पानी आ रहा है, अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो सर क्या हुआ इसमें, टैंक भी वही था, पानी भी वही था, पाइप भी वही था, घर भी वही था, फ्लोर भी वही था, बिल्डिंग भी वही था, सब वही था, तो पहले केस में नहीं आया, दूसरे केस में क्यों आया? बिकॉज उसे एक हायर अल्टीट्यूड पे रखने के बाद ग्रेविटी से वो पानी ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। क्लियर है? Yes. सो फर्स्ट एग्जांपल वाज अबाउट एयर, सेकंड एग्जांपल वाज अबाउट Water. वाटर। अब लेट अस टेक एग्जांपल, आप सब लोग एक ऊंचाई पर आए 3-4 फीट के और वहां से कूदे, बरोबर? अब कूदने के बाद आप एकदम आराम से लैंड होंगे क्या? नहीं। क्या इफेक्ट होगा वो सबको पता है। तो सॉलिड का भी अगर मैं एग्जांपल लूं, गैस और लिक्विड तीनों स्टेट का एग्जांपल लूं, तो पता क्या चलेगा कुणाल? all physical quantities flows from higher potential to Lower potential. सर्व भौतिक पदार्थांचं स्थलांतर कधीही उच्च दाबाकडून कमी दाबाकडेच होत असते. Keeping this in mind, the positive charge is of higher potential. Positive charge is of higher potential, and from here the charge will flow to negative, that is lower potential. Therefore direction of conventional current is from positive to Negative. positive to Negative. किसका डायरेक्शन? Conventional current. और इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो होते हैं? Negative to positive. ये लेसन, ये लेक्चर और ये वर्कशॉप सुनने वाला कोई भी जिंदगी भर करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं भूलेगा, राइट? What is current? तो करंट अभी सर थोड़ी देर पहले आपने बताया, one electron is flowing from one atom to the another atom, and this flow of electron is called as current, electricity, बरोबर? विद्युत धारा म्हणजे काय? अणूच्या बाह्यतम कक्षेमधून एक इलेक्ट्रॉन दुसऱ्या अणूच्या बाह्यतम कक्षेमध्ये जर प्रवाहित होत असेल, त्या इलेक्ट्रॉनच्या वहनाला विद्युत धारा असं संबोधले जाते. सर किती छान मराठी बोलता हो तुम्ही, धन्यवाद. तो त्याला विद्युत धारा म्हणतात. विद्युत धारेचं एकक काय रे? एम्पियर. ऑलरेडी सांगितलेलं की विद्युत धारेचं एकक काय आहे? एम्पियर. विद्युत धारेचं एकक काय आहे? एम्पियर. तो अभी क्वेश्चन आया है, व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? सो सर अभी ये मैथमेटिकली बताना है क्या? यस. सो इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं? आई, कैपिटल आई. और आगे हमने क्या लिखा हुआ है? Q बाय टी. क्या लिखा है? Q बाय टी. सर Q क्या है? चार्जेस. Q क्या है? T क्या है? बरोबर. चार्जेस का यूनिट क्या है? कूलोम. टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड. कूलोम पर सेकेंड. सर फिर डेफिनेशन क्या होगी, याद कैसे रखेंगे? बहुत आसान है. When charges are flowing, or when one charge is flowing for a unit time, the output is ampere. Output is Ampere. clear? मतलब चार्जेस फ्लो होना कंडक्टर में कुछ समय के लिए, इसे कहते हैं Ampere. करंट. और उसको अगर 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? इसमें सब में 1 करो. 1 1 1. When 1 coulomb charge flowing through the conductor for 1 second, then the current generated is 1 ampere. Clear? याद रहेगा? Sure? Yes, sir. अब ये कुछ बैटरी के टाइप है. लिथियम होता है, कैडमियम होता है, नियॉन होता है, राइट? लीड एसिड होता है. बहुत सारे बैटरी के टाइप्स हमने देखे. ये बैटरी जनरली आप रिमोट कंट्रोल में देखे. ये बैटरी प्रोजेक्ट्स में यूज करते जनरली बच्चे.
यस, यहाँ पर आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल्स, व्हाट आई सेड, डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल्स इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। सो दो पोटेंशियल कौन से? थोड़ी देर पहले हमने सीखा है। कौन से पोटेंशियल? पॉजिटिव, नेगेटिव। कौन से दो पोटेंशियल की बात करें हम लोग? पॉजिटिव, नेगेटिव। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और उसी को दूसरा नाम क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज। क्या है? वोल्टेज। तो ये पोटेंशियल कहां से कहां फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो अगर मुझे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? यहाँ पर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा है, बट ये ऐसा है। हमने रजिस्टर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया है? रजिस्टर। रजिस्टर। उसके साथ क्या दिया हमने? बैटरी। बरोबर सर। यहाँ क्या है? एमीटर। क्या है? एमीटर। ये एमीटर इस प्रकार होगा, एमीटर, राइट। इसमें दो टाइप आपको मार्केट में मिलेंगे। माइक्रो एमीटर जो माइक्रो एम्पियर्स मेजर करता है, 10⁻⁻⁶। दूसरा आएगा मिली एम्पियर मेजर करने के लिए, मिली एमीटर जो 10⁻³ का करंट मेजर करेगा। क्लियर है? करंट में अगर डिफ्लेक्शन आता है, किसी भी करंट में डिफ्लेक्शन आता है, मतलब थोड़ा चेंज आता है, उसे मेजर करने के लिए या उसे आइडेंटिफाई करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर करंट रेटिंग नहीं देता, कितना करंट है उसका वैल्यू नहीं देता, डिफ्लेक्शन कितना है वो बताता है, चेंज इन करंट बताता है। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? चेंज इन करंट। क्लियर है? श्योर? तो ये यहाँ पर हमें क्या मेजर करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। सर आपने ये ऊपर एरो क्यों किया? बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज मेजर्ड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझा? मतलब आपके घर पे जो 3 पिन है उसमें अगर वोल्टेज मेजर करना है तो आप उसमें मल्टीमीटर डायरेक्ट प्लग इन कर सकते हो, दोनों लाइन और न्यूट्रल में, और उसे वोल्टेज पर रखकर मेजर कर सकते हो, एसी वोल्टेज, राइट। लेकिन अगर गलती से किसी ने करंट मेजर करने की कोशिश की पैरेलल में, मल्टीमीटर जगह पर बंद है ना, स्पार्क होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सो सर करंट कैसे मेजर करते हैं? करंट मेजर करते हैं हमेशा सीरीज में। कैसे? सीरीज में। और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पैरेलल। समझा? ये जिंदगी भर याद रखना। पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज एंड ऑलवेज मेजर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। Current can be measured or must be measured always and always in series combination only. Is it clear? Yes, तो sir. सीरीज में करना है मतलब क्या करना है? उस रजिस्टर के पाथ में जहां से करंट फ्लो हो रहा है उस पाथ में मीटर कनेक्ट करना है। तो ये जो मीटर है माइक्रो एमीटर, वो उस पाथ में होना चाहिए। मतलब ये अगर करंट, ये अगर रजिस्टर है तो इसका एक वायर इधर जाएगा, ये दूसरा बैटरी की तरफ जाएगा और बैटरी का सेकंड इसके पास आएगा। क्लियर? यस सर। श्योर? और पैरेलल कैसे होता है? कुछ इस प्रकार होता है, पैरेलल, एक दूसरे के सामने, पैरेलल। क्लियर है? पक्का? यस श्योर? यस। तो मुझे पूरा गारंटी है कि आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप का पार्ट 1 समझ में आया होगा। अभी इसका कुछ और पार्ट बाकी है जिसमें हमें हीटिंग इफेक्ट, जूल्स इफेक्ट, बाकी इफेक्ट सीखने हैं। मुझे सुनने वाले, मैं वापस 5 मिनट में लाइव आने वाला हूँ, इसीलिए कहीं जाना नहीं। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। तब तक ये 5 मिनट्स क्यों दिए आप सबको?
रिवीजन के लिए। क्यों दिए हैं? Revision रिवीजन के के लिए। तो इसे रिवाइज करना है। Within next 5 minutes we will come back with the part 2 of basic electronics workshop. Right? क्लियर है? Yes, सब sir. रिवाइज करेंगे? Yes, sir. समझ में आया टॉपिक? Yes, sir. श्योर? Yes.